Hey, what's up cricket fans? Welcome to Reverse Swing, the cricket show. मैं हूं आपका दोस्त अहमद और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में खेले जाने वाले तीसरे मैच के पहले दिन के बारे में। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। इस टेस्ट सीरीज़ में फाइनली बहुत अरसे बाद जो है हमें एक 90 ओवर्स अ डे जो है वो देखने को मिला। स्वाभाविक मौसम के आसार कुछ अच्छे और नेक नहीं लग रहे थे, बट फाइनली वी वर एबल टू गेट अ गुड डेज वर्थ ऑफ क्रिकेट इन। Unfortunately for Pakistan, we lost the toss and सुबह में जब पिच का इंस्पेक्शन हो रहा था तो लग रहा था कि दोनों कैप्टन जो थे वो पहले टॉस जीत के बैट करना ही चाहते। So the toss didn't work in our favor, but it is what it is. स्क्वाड के हिसाब से मैंने पिछले 2-3 वीडियोस में बात की थी। आई वाज होपिंग कि फवाद आलम डिड नॉट गेट ड्रॉप्ड, दैट्स फाइन। अब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाएगी सिचुएशन क्योंकि पाकिस्तान विल नीड टू बैट सेकंड एंड फोर्थ, सो आई थिंक दैट brings immense pressure on Fawad and obviously the rest of the batting lineup as well. इंग्लैंड की आई थिंक चेंजेस थोड़ी सी एक्सपेक्टेड थी। बेन स्टोक्स इज स्टिल नॉट रिटर्न फ्रॉम न्यूजीलैंड, सो जोफ्रा आर्चर केम एंड रिप्लेस करन एंड देन एवरीबडी एल्स रिमेन द सेम। Let's talk about Zach Crawley for a bit, right? Zach Crawley ने आज for a 22-year-old बहुत ही mature inning खेली है. You know, I think he just crawled on his way to, you know, he's basically crawling his way to a double century. And it's जिस तरह इंग्लैंड की शुरुआत हुई थी, रोरी बर्न्स ने जो है continue to give us the gift of his wicket to our bowlers, और उसके बाद it's interesting कि at one stage England were 73 for 2 and then they were about 127 for 4 and Pakistan really failed to capitalize on that, right? And 200 run की partnership होगी between Zach and Josh the boss. I think I would like to focus a little bit on Zach Crawley's inning today because जैसे मैंने कहा बड़ी mature inning थी. He was not picked for the first test because they were trying to squeeze in Ben Stokes as a specialist batsman. उसके हिसाब से I think second test match में एक ही innings खेल पाए थे. He scored 50 on that और आज 177 not out पे गए हैं. तो एक मैंने analysis देखा था Zach का and I'm going to share that with you guys. It's not my personal analysis, but I wanted to share with you. I'm calling Zach Crawley the Nightcrawler, right? But if you look at that, बड़ी important बात है, जब सिबली की विकेट गिरी थी, Zach was playing at 45 of 46. रूट की जब विकेट गिरने वाले से पहले he was playing at about 8 runs or 55 balls, and century से थोड़े अरसे पहले he was playing 44 of 70. After century he scored about 67 runs off 77 balls, तो काफ़ी खुल के aggressive थोड़ा खेला. Very important part right here, stumps की जब बात आती है. So if you look at that, 21 balls में he only scored 3 runs, right? So most important thing इसमें जो आपने देखनी है, एक maturity में आपको explain कराना चाह रहा हूँ 22-year-old की, कि जब runs की ज़रूरत थी he was playing very aggressively. Situation के हिसाब से, you know, he slowed down, right? रूट जब आए उस वक्त, I mean, you can look at the strike rate dropped tremendously, and then stumps जब आपको unnecessary wicket नहीं देनी है अपनी, जब आप set हुए हैं और अच्छी position पे खेल रहे हैं, अच्छे runs आप करा रहे हैं, तो ये एक अच्छी बैट्समैन की बड़ी अच्छी पहचान होती है कि they don't really easily throw their wicket away, and that shows the level of maturity and the confidence that he has in his abilities, which lacks unfortunately in most of Pakistani batsmen, whether they are experienced or inexperienced. So I just wanted to highlight real quick, Nightcrawler का खिताब मैंने उन्हें दिया है. Nightcrawler मार्वल के एक जो हैं वो सुपर हीरो हैं. उनकी खासियत ये है कि वो टेलीपोर्ट करते हैं और चिपक जाते हैं, राइट? ही हैज़ वेरी स्टिकिंग कैपेबिलिटीज. तो आई थिंक ज़ैक क्रॉली भी आज हमारे लिए जो हैं वो चिपकली की तरह चिपक चुके हैं और होपफुली यू नो ही इज़ एबल टू वी आर एबल टू गेट हिज विकेट. अदरवाइज आई थिंक डबल सेंचुरी इज ऑन एंड the way he's batting based on the breakdown I showed you guys, I mean, he might be on to a triple century. Josh the boss, I mean, you know, he's back to his aggressive self, coming freely down the pitch playing. So we'll see. कल का दिन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है पाकिस्तान के लिए. होपफुली बारिश हो जाए. वैसे तो पूरा टेस्ट मैच बारिश हो रही थी, आज क्यों नहीं हुई, कल हो जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि आई थिंक एट दिस पॉइंट इफ अभी इंग्लैंड इज एट व्हाट 332 for 4, अगर 450-500 की लीड चढ़ गई तो दिस गेम इज जो है स्कोर चढ़ गया तो दिस गेम इज डन. Pakistan, as I said, will have to bat second and probably will be looking at a follow on based on how our batting is going. Pressure थोड़ा
नहीं कर पाते हमारे बैट्समैन, तो दिस मैच आई थिंक शुड बी रैप्ड अप बाय डे नंबर 4 इफ नॉट सूनर. So let's hope for the best tomorrow. पाकिस्तानी पेसर्स के ऊपर जल्दी से थोड़ी सी बात करना चाहूँगा. देयर्स बीन अ लॉट ऑफ चैटर कि मैजिकल डिलीवरीज आ रही हैं, बट एक दो आ रही हैं मगर कंसिस्टेंसी नहीं नज़र आ रही. वी गॉट टू बी पेशेंट. अब्बास को साइड पे अगर हम कर दें तो शाहीन इज़ 20 years old and Naseem is about 18 years old. So we have to be patient. Naseem ka bhi, I think it's first time in England. So we can't expect the world from them right now. Yes, they're good bowlers. They will take time for them to get used to the conditions and how to take advantage of the conditions. Or game time ka bhi experience hota hai, but I didn't understand the concerns, but maybe a little too early to be too harsh about them. और कोई ऑप्शंस ऐसे हैं नहीं. अगर आप देखें, आपको स्टैंड्स में ग्राउंड में चलते हुए नजर आएंगे वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर, Imran Khan, tried, tested, but it's time to move on. It's time to start grooming the young ones, right? So I think the right approach there, just have to be patient with the Pakistani Pacers. अजहर अली की कैप्टनसी के ऊपर बात करते हैं. एक स्टैट मिला था आज, वो दिखा रहे थे मैच के बीच में भी. सम पीपल कमेंटेड ऑन इट एज वेल. was about कि जब अब्बास बॉल करा रहे होते हैं और मोहम्मद रिजवान एज ए कीपर है, जो भी कीपर है, जब when they're keeping up to the stump, यानी कि फास्ट बॉलर के टिपिकली पीछे आप खड़े होकर कीपिंग करते हैं, बट आप स्टंप के ऊपर आके जब कीपिंग करते हैं तो अब्बास की जो एवरेज है इट्स अबाउट 9 की एवरेज है, ठीक है, विच इज़ रिमार्केबल आई थिंक फॉर अ टेस्ट मैच बॉलर. एंड अगर आप देखें भी पिछले टेस्ट मैच में व्हेन एवर रिजवान आए हैं स्टंप के ऊपर आके उनको कीप करने के लिए, I think he's done a very phenomenal job. I think overall Rizwan ki keeping throughout the series has been really good. Caught me by surprise. I'll be the first to admit that. आज भी एक दो बॉल अगर आपने नसीम शाह की देखी होगी, ऐसे आई और ऐसे आई, right? तो काफ़ी it's difficult to keep in those conditions. But going back to Abbas and Rizwan, I think Pakistan missed a trick there. They should have kept Rizwan up at the stumps. And that's on Azhar Ali, right? Especially if the batsmen are playing down, coming down the pitch, अगर crease के बाहर खड़े हुए हैं to negate the LBW scenario, so you have to take advantage of that. Quick reminder of that, अब्बास, अगर आपको याद होगा पहले टेस्ट मैच में जो बेन स्टोक्स की विकेट ली थी, सेम सिनारियो था. बेन स्टोक्स जो है आगे आए खेलने, and then he got beat by the swing and the length of the ball, and the rest is history, right? तो आई थिंक थोड़ा सा गेम प्लान के ऊपर वापस कोशिश करनी पड़ेगी, एंड विल नीड टू कम आउट विद मोर अटैकिंग एंड अग्रेसिव ऑप्शंस. स्लिप फील्डिंग हैज बीन वेरी गुड फॉर पाकिस्तान. आई थिंक आई सॉ a graphic where we are number 1 in slip catching. चले कहीं तो अवार्ड मिल गया हमें, but we got to do a better job. Overall batting, bowling, and then fielding obviously is a very important part of the game as well. But that's been going on. What else? I think पांचवा बॉलर थोड़ा सा महंगा पड़ेगा. आज हमने जो है वो चाइना का जडेजा फवाद आलम को तुम लेकर आए थे. उन्होंने कोशिश की अपनी स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स या अनऑर्थोडॉक्सी व्हाटएवर कराने की, बट let's see. Too early to call of that, anything about that. But कल का जो मैच है वो कल का जो डे है, it will be very interesting. I think weather looks clear. Josh the boss full mood में लग रहे हैं. I think the message from the England camp would be to just start scoring runs, and then I think Zach's just going to stick around and just do what he's doing right now. So Pakistan has to look for early wickets tomorrow, otherwise we will be in a lot of trouble, and that is not going to be good news, because I am not confident that our batsmen will be able to handle the pressure. तो उम्मीद है कल आपसे बात करेंगे वापस डे 2 के बारे में. ये तो आज हमारा छोटा सा सिनॉप्सिस डे 1 के बारे में, एंड आई होप दैट यू लाइक्ड इट. Like, subscribe, share, feel free to comment, post any questions. We are here for you guys, cricket related stuff, and we'll see you tomorrow. Your worst swing.